Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are discussing about the second last lesson of your class 9 books, a letter about the village life in Pakistan, यानी एक खत जिसमें आपके पाकिस्तान की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है, लेटर में लिखा होता वो नहीं पढ़ रहा, आगे से पढ़ते हैं। माय डियर नोमी यानी मेरे अजीज नोमी है, प्यारे नोमी, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर विच आई रिसीव सम टाइम बैक्स। आपकी बहुत मेहरबानी जो आपका ख़त मुझे लिखा जो मुझे कुछ देर पहले ही मौसूल हुआ है। आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर। मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैं आपको उसका जवाब जल्द नहीं दे सका। आई अश्योर यू दैट आई विल नॉट टेक सो लॉन्ग टू रिप्लाई इन फ्यूचर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुस्तकबिल में कभी मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा आपका जवाब देने में। द रीज़न फॉर द डिले वॉज दैट आई वेंट टू माई अंकल्स विलेज ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। डिले की जो वजह जो लेट होने की वजह थी वो ये थी कि मैं समर हॉलीडेज़ के अंदर, छुट्टियों गर्मी की छुट्टियों के अंदर अपने अंकल के गांव गया हुआ था। आई हैड नेवर बीन देयर एंड आई वांटेड वेरी मच टू सी समथिंग ऑफ विलेज लाइफ। मैं वहां कभी नहीं गया था और मैं गांव की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ देखना चाहता था। Fortunately, the day before my holidays began, my eldest uncle came to Karachi and I was able to return with him to his village. खुशकिस्मती से मेरी छुट्टियां शुरू होने से एक दिन कबल मेरे बड़े चचा कराची आए थे और मैं इनके साथ इनके गांव वापस चला गया। In this letter, I will tell you all that I have seen. इस खत में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मैंने वहाँ पर देखा। I hope you will enjoy it as you were born and brought up in Canada. मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ करेगा क्योंकि आप कनाडा में ही पैदा हुए और वहीं आपने परवरिश पाई है। Well, the villagers are very simple and straightforward people. ठीक है, देहाती जो लोग हैं बहुत आसान जिंदगी सादा लोग होते हैं। They lead simple, happy and contented life in their own way, which is quite unlike a modern city life. वो अपने अंदाज में सादा, खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं जो हमारी जदीद शहरी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। Their houses are different from those in big cities. उनके मकान बड़े शहरों के में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ हैं। They are mud plastered except for a few that are made of red bricks. वहाँ मट्टी प्लस होते हैं सिवाय इन चंद के जो सुर्ख ईंटों से बने होते हैं। And streets are narrow and dusty. ज़्यादातर जो गलियां हैं वहाँ की तंग और खाक आलूद होती यानी मट्टी से भरी हुई होती हैं। Usually the villagers go about on foot. आमतौर पर देहाती पैदल चलते हैं। They don't use motor cars and taxis or even buses for short distances. वो छोटे फासलों के लिए मोटरसाइकिल, टैक्सी या बस का इस्तेमाल नहीं करते। That is why they are healthy and strong. यही वजह है कि वो सेहतमंद और मजबूत हैं। Markets in villages are not the same as in Karachi और टोरंटो। देहातों की जो बाजार होते हैं वो कराची और टोरंटो की तरह नहीं होते। टोरंटो इंग्लैंड का एक शहर या मार्केट का नाम है। In the village shops are few and scattered. गाँव में दुकानें कम और बिखरी हुई होती हैं। The carpenters and the blacksmith are the two workmen who are needed most in the village. बढ़ई और लोहार वो दो मजदूर हैं जिनकी गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। They make and repair the farmers' tools and do other odd jobs. वो किसानों के औजार तैयार करते हैं और इनकी मरम्मत करते हैं और दीगर अजीबोगरीब मुलाजमतें भी करते हैं। Two other important persons in the village are the primary school teacher who also act as the postmaster of the village and the imam of the mosque. गांव के दो दीगर अहम अफराद में सबसे पहले प्राइमरी टीचर, स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं जो गांव के पोस्टमास्टर का काम भी सर अंजाम देते हैं, और दूसरे मस्जिद के इमाम। The imam exercises a great influence on the villagers who look up to him for moral and religious guidance and for the treatment of minor ailments and common diseases of their children. इमाम देहातियों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं जो अखलाकी और मजहबी रहनुमाई और इनके बच्चों की मामूली बीमारियों और बीमारियों का इलाज भी करते हैं। He also runs a maktab where he teaches the Holy Quran to young
children, for which he does not charge any fee but accepts small presents like milk, butter or ghee from the parents of the children as a token of love and affection. اس کے علاوہ وہ ایک مکتب بھی چلاتے ہیں جہاں وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، جس کے لیے کوئی وہ فیس وصول نہیں کرتے، لیکن بچوں کے والدین سے دودھ، مکھن یا گھی جیسی چھوٹی تحائف کو پیار کی علامت کے طور پر قبول کر لیتے ہیں. There is a meeting place in every village known as اوتاک. ہر گاؤں میں ایک ملاقات کی جگہ ہوتی ہے جسے اوتاک کہا جاتا ہے. The villagers meet there in the evening or in their leisure hours to talk about the weather, the crops and village affairs and enjoy the folk songs sung to the tune of the ghagar and the tamburo. گاؤں کے لوگ شام کو یا اپنی فرصت کے اوقات میں موسم، فصلوں اور گاؤں کے امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور گھاگر اور تمبوروں کی دھن میں گایا ہوا لوک گیتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. Just as Otak is the meeting place for men, the village well is the meeting place for women. جیسے کہ اوتاک مردوں کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے، ایسے ہی گاؤں کا کنواں عورتوں کے ملنے کی جگہ ہے. The village people generally awake at dawn. گاؤں کے لوگ عام طور پر صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں. They are not late sleepers like city pupils. یہ شہر کے لوگوں کی طرح دیر سے سونے والے نہیں ہوتے. Men go to say their prayers in the mosque while women say their at home. مرد مسجد میں اپنی نماز پڑھنے جاتے ہیں جبکہ خواتین گھر میں اپنی نماز ادا کرتی ہیں. Men milk the cows and buffaloes and women churn milk to make butter and lassi. مرد گائیں اور بھینسوں کے دودھ نکالتے ہیں اور عورتیں مکھن اور لسی بناتی ہیں اسی دودھ سے. Nowadays, tea also appears to have found its way into the homes of some of the villages. لیکن آج کل آپ کو گاؤں کے کچھ گھروں کے اندر چائے بھی مل جائے گی. Village life has its own charms. گاؤں کی زندگی کا اپنی ایک دلکشی ہے. It is very pleasant to go and live there for a few days. وہاں جا کر کچھ دن رہنا بہت خوشگوار ہے. In cities there are various kinds of pollution, air pollution, water pollution and noise pollution. شہر میں ہر طرح کی آلودگی پائی جاتی ہے جیسے کہ فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی. In villages the atmosphere is peaceful and people enjoy the fresh air and natural beauty. دیہات کا ماحول پرامن ہے اور لوگ تازہ ہوا اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. You can watch a villagers working in this field from dawn to dusk. آپ دیہاتیوں کو اپنے کھیتوں میں صبح سے شام تک کام کرتے دیکھ سکتے ہیں. You can see him working with a sickle in his hand reaping the crop under the scorching sun. آپ انہیں اس کو یعنی کہ کیا نام دیا، سکل ایک آلہ ہے جس سے وہ فصل کو کاٹتے ہیں. اس کے ذریعے آپ انہیں چمچماتی ہوئی دھوپ میں بھی فصل کاٹتے ہوئے دکھیں گے. The farmer's life is a model of hard work. کسان کی زندگی محنت کش کا ایک بہترین نمونہ ہے. I hope you will find this letter interesting. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خط دلچسپ لگا ہوگا. I am looking forward and hearing from you. میں آپ کا منتظر ہوں اور آپ کے جواب سننے کا انتظار میں ہوں. My respects and salams to uncle and auntie. Love to dear Ramona. چچا اور آنٹی کو میری عزت اور سلام. رمونا سے میرا پیار دینا. Your loving cousin. آپ کا پیارا کزن شاہد. Thank you students. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ اینڈ ہوتا ہے. Any questions? Here there is the 3 important questions for this chapter. You write down in your copy and give answers in your own wording. Thank you. Allah Hafiz.